Hi all, let's talk about risk in cybersecurity. Give me 15 minutes and you'll know everything about risk. So let's start what exactly risk is. Basically, risk is the possibility that any threat can exploit a vulnerability and cause harm to an asset. मतलब कोई थ्रेट जैसे अटैकर किसी वल्नरेबिलिटी या आपकी वीकनेस का फायदा उठाकर आपके वैल्यूएबल एसेट्स को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को रिस्क कहते हैं. इन प्रैक्टिकल टर्म्स रिस्क इज नॉट अबाउट अटैक्स हैपनिंग, बट it is about the impacts that it creates on your assets, on your systems, on your users, or even your business. तो रिस्क एग्जिस्ट करता है जब ये तीन एलिमेंट्स साथ में प्रेजेंट हैं. कौन कौन से? पहला एसेट, थ्रेट और वल्नरेबिलिटी. एसेट दैट इज समथिंग वैल्यूएबल, थ्रेट जो कोई हमें नुकसान पहुंचा सकता है, वल्नरेबिलिटी कोई भी वीकनेस. So if any of these elements are missing, then risk can be reduced. Let's understand risk flow. So there is an asset which is like your valuable data or your system, and then a threat attempts some attacks. Okay, like some attacker is trying to steal your data or trying to get into your system. So what is the possibility that they can get into your system? Okay, so it depends on the vulnerabilities present in your system. Let's say an imaginary perfect system which is not possible in real life. Let's just assume. So most secured system is there and there is no weakness in the system, so there will be no risk. Okay, and coming back to practical real life scenarios, कुछ ना कुछ वीकनेस जरूर होगी सिस्टम में. ओके, देन रिस्क अकर्स. दैट मीन्स रिस्क इज देयर and that threat will use this weakness to reach your system. And what will happen then? You will get impacted. How? There could be a data breach, like your sensitive data is stolen, or some financial loss, and many other consequences. अब हम लोग रिस्क को एक रियल लाइफ सिनेरियो समझते हैं. मान लेते हैं आपका फ्रेंड रोहित, उसके सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, बैंकिंग डिटेल्स, जैसे कि उसके पासवर्ड्स, जितने भी सोशल मीडिया के पासवर्ड्स, एवरीथिंग वो अपने लैपटॉप पर स्टोर करके रखता है. वो वीक पासवर्ड यूज करता है. जैसे मान लेते हैं कि उसने रोहित@123 पासवर्ड यूज किया हुआ है ऑलमोस्ट सारे वेबसाइट्स पर, बैंकिंग वेबसाइट्स पर भी. और एक और चीज वो फ्रीक्वेंटली करता है कि पब्लिक वाईफाई जो जैसे कैफेज में, रेलवे स्टेशन में, मेट्रो स्टेशन में वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं, उनको कनेक्ट कर लेता है. दोज आर नॉट सेफ वाईफाई नेटवर्क्स. मान लेते हैं कि आप अटैकर हो एंड यू डोंट लाइक रोहित, सो you monitor your friends network, whatever network traffic is there, कि वो कौन कौन से वेबसाइट्स पर जा रहा है, क्या क्या चेक कर रहा है, एंड एवरीथिंग, लाइक व्हाट सोशल मीडिया इज यूजिंग. एंड आप उसकी वीक सिक्योरिटी को एक्सप्लॉइट करते हो एंड यू गेन एक्सेस टू ऑल द सेंसिटिव डेटा एंड ऑल द बैंक डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग. तो अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि एसेट यहाँ पर क्या है, कि जो रोहित का पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा है, और थ्रेट क्या है, अटैकर यानी कि आप, जो अटैक करना चाहता है रोहित के पर्सनल लैपटॉप पर. और वल्नरेबिलिटी क्या है इधर? वल्नरेबिलिटी वीक पासवर्ड जो उसने यूज किया हुआ है, और दूसरी चीज इनसिक्योर नेटवर्क्स पर, वो जैसे इनसिक्योर नेटवर्क क्या है यहाँ पर, वाईफाई, पब्लिक वाईफाई यूसेज. हियर रिस्क इज डेटा थेफ्ट एंड मिसयूज. तो आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, आप उसका मिसयूज भी कर सकते हो, राइट? सो लेट्स डिस्कस की कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क इन डिटेल. लेट्स स्टार्ट विद एसेट. तो एसेट क्या है? कोई भी वैल्यूएबल चीज
जैसे अगर मेरा एसेट है तो मेरे लिए वैल्यूएबल है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है तो उनके लिए वैल्यूएबल है, जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है. सो इट्स लाइक एनीथिंग वैल्यूएबल एंड नीड्स प्रोटेक्शन. सिंपल. एसेट्स में क्या क्या आ सकता है? योर डेटा, कस्टमर इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, your systems, servers, applications, people, employees, users, reputation, and brand value. So this is all for an organization, you can say. And threat क्या है? एक potential candidate है जो asset को नुकसान पहुंचा सकता है. Okay, like it can cause harm to an asset. So threats क्या क्या हो सकते हैं? External attackers, hackers, malwares, ransomware, insider threats, employees, natural disasters, system failures, etc. etc. Like it can be anything. और vulnerability क्या है? एक weakness है आपके सिस्टम में, जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है. कॉमन vulnerabilities क्या क्या हो सकती है? Like weak passwords, outdated softwares, misconfigured systems, lack of security controls. Okay. So basically it's all about weakness. Just remember this keyword. So we have already discussed risk. I hope everyone understood it. We'll move on to important aspect of risk, which is usually asked in your exams or in your interviews sometimes as well. We have a formula for risk. Risk is equal to threat into vulnerability into impact. Okay. So you know these all are directly proportional to risk. That means अगर vulnerability low है तो risk भी कम हो जाएगा. अगर impact high है तो risk critical या high हो सकता है. और जरूरी नहीं है कि एक फैक्टर लो है तो रिस्क कम ही होगा. दैट मीन्स ऑल थ्री फैक्टर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल. अगर इम्पैक्ट हाई हो गया और थ्रेट का प्रोबेबिलिटी लो है, दैट मीन्स योर रिस्क कैन बी हाई. ओके. So it's like a formula in real world that they use in organizations to prioritize risk for each asset. Okay. Let's understand risk in business perspective. Because you all are going to work in a company someday, right? And we need to know how exactly risk is analyzed in an organization. So let's say a company stores their customer data on a cloud server, which usually every company is doing right now. And their systems are not patched regularly, and that's a red flag. And access controls are weak, another red flag. And an attacker identifies that vulnerability and then gains the access and downloads the sensitive data. So what happened here? See, customers lost their trust to company, and the company faces financial penalties. Legal actions can be taken. Okay. So what was the problem here? कंपनी ने अपना सर्वर अपडेट नहीं किया, उनके सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो थे वो काफी वीक थे. तो अटैकर ने क्या किया? वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर उसको एक्सप्लॉइट किया और फिर उनका डेटा लीक कर दिया, जिससे कि कंपनी को नुकसान हो गया. राइट. सो दिस इज काइंड ऑफ अ होल बिजनेस प्रॉब्लम. राइट. You cannot say risk is just a technical problem. It can impact your business on a large scale, right? So we have to be serious about it. Moving on to types of risk. So there are mainly two types of risk, inherent and residual. So inherent risk is basically whatever level of risk you have in your asset or in your system without any security controls. Okay. So like I have, so for example, we are storing sensitive data without encryption on our system. Okay. So that is without encryption means we are not encrypting. That is a security control. So we are not using that security control. So that is an inherent risk we have. And then we have residual risk. This means even after applying your security controls, we have some residual risk. Residual means bacha hua. It's like remaining risk.
So we all know that no systems can be 100% secure, right? So there will be some level of risk that will exist. Moving on to risk assessment approaches. So basically, organizations have two types of risk assessment, qualitative and quantitative. So qualitative risk assessment is all about categorizing your risk in high, medium, low, or critical. That is easy to understand and fast to implement. Why? Because you can say that we have a high risk, we have a medium risk, we have a low risk, and you can categorize what to remediate first. जैसे कि हम बोलेंगे कि हाई मीडियम और क्रिटिकल फाइंडिंग्स को जल्दी रिमेडिएट करना है एंड दिस लेवल ऑफ रिस्क मे हैव डिफरेंट टाइम फ्रेम और टाइम लाइन फॉर रिमेडिएशन. जैसे कि क्रिटिकल को हम बोल सकते हैं कि 7 दिन में हमें रिमेडिएट करना है, मतलब रिजॉल्व करना है ये वाले रिस्क को. और हाई मीडियम को बोल सकते हैं ऐसे 14 या 60 डेज में करना है. ऐसे it depends on organization to organization. For example, weak authentication is marked as high risk. Weak authentication means you cannot authenticate everybody into your organization, right? So it will be a high risk. So you have to resolve that in a shorter period of time, right? And then we have quantitative risk, which is more like using numbers. Let's say your business team doesn't understand these high, low, medium things. Okay, they want to see your numbers, how to measure the risk exactly. They want to see what impacts can be made. So what we do here, we estimate exact financial loss for each asset that can have a vulnerability for different kinds of vulnerabilities. And then we show those numbers to business teams, and then they may decide the funding for security investments, right? So now we have risk calculations. These are mostly asked in your interviews or your different certifications. We have different terms here. Single loss expectancy, SLE. So SLE is basically the financial loss from a single incident. Okay. So the formula is SLE equals to asset value into exposure factor. So for example, if a server is worth 10 lakh rupees, okay, and it can lose 40% value in an attack. Attack can be anything. It can be an earthquake or anything, right? And then we calculate SLE. So SLE would be 4 lakh. Simple calculation. Then we have ARO, annual rate of occurrence. So this is basically how often an incident is expected to be occurred per year. Just remember it is per year. So for example, if an attack happens once every 2 years, then ARO will be 1 by 2, that means 0.5. And then we have ALE, annual loss expectancy. So ALE is expected yearly loss. So equals to SLE into ARO. So for example, here ALE will be 4 lakh into 0.5 will be 2 lakhs. So why we are doing all these calculations here is because these calculations help organizations to decide whether they should invest in security controls or not. Okay. So if your ALE is less than whatever security controls you are implementing, that means they will not be implementing security controls, right? Because they can afford this much loss. And if they cannot afford this much loss and your security controls are under budget, like they are less than this, that means they'll go for security controls. से अगर हमारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स इससे ज्यादा महंगा है, जैसे अभी उन्होंने सिक्योरिटी टूल खरीदा है किसी कंपनी से, उसका बिल 5 लाख आ रहा है और 3 लाख आ रहा है, तो दैट मीन्स ईयरली इट इज मोर देन व्हाट दे कैन लूज इन एन एक्सपेक्टेड इंसिडेंट, जो कि अभी हुआ भी नहीं है. इसका मतलब क्या है कि दे वोंट गो फॉर इट, राइट? Coming to risk management. So basically risk management is process of identifying, analyzing and then reducing risk to an acceptable level.
दैट मीन्स कि पहले हमें रिस्क को जानना है कि क्या है एग्जैक्टली और फिर उसको इवेल्युएट करना है, एनालाइज करना है कि कितना ज्यादा है, क्या सिवियरिटी है, उसको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाई रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लो रिस्क इज लेस इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो हाई या क्रिटिकल रिस्क होते हैं उनको रिड्यूस करना है एक एक्सेप्टेबल लेवल तक, जो मतलब कंपनी अफोर्ड कर सकती है, राइट। सो we have already discussed. It involves identifying risk, assessing impact, applying controls, monitoring continuously. Okay. Let's see risk treatment options. कि हम रिस्क को कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसके 4 मेन कैटेगरीज होता है। पहला इज रिस्क अवॉइडेंस, स्टॉप द एक्टिविटी कॉजिंग द रिस्क। दिस इज वेरी सिंपल, ओके, बट इट कैन नॉट ऑलवेज बी डन। For example, not storing sensitive data online. So your data is safe. So you have avoided the risk. Second is risk mitigation. Reduce the risk using security controls. तो यहाँ पर हम लोग रिस्क कम करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ सिक्योरिटी कंट्रोल्स का यूज करके, जैसे कि इंक्रिप्शन यूज कर सकते हैं। अगर हम सेंसिटिव डेटा कहीं पर स्टोर कर रहे हैं तो उसको इंक्रिप्ट कर देंगे, प्लेन टेक्स्ट में नहीं रखेंगे। फायरवॉल्स यूज करेंगे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। द थर्ड टाइप इज रिस्क ट्रांसफर. Transfer your risk to another entity. For example, you can take cyber insurance for cyber frauds or any kind of scams if you fall into, or third party vendors, like you hired a cyber security company to handle all your security issues. So this is transferring your risk to another organization. And the last one is risk acceptance. So we are accepting the risk whether it is low or if it cannot be resolved, right? So this main decision will be decided by your business team if they are agreeing to accept the risk or not. So here we have another example. Say there is a fintech company and they manage sensitive customer data, banking details and personal information, and company continues using outdated softwares and delays security updates, and employees are also using weak passwords, monitoring is very limited. So what will happen? Attacker can easily scan the systems and identify known vulnerabilities and gain access, right? And most of the sensitive data will be leaked and company can face various consequences. So I have few interview tips for you. Always explain risk with a real world scenario. If you are asked about what is risk, do not just explain the definition. Always go with the real world example. As you have already discussed 2-3 examples here in this video, you can use any of those or you can make on your own. Clearly mention these 3 important elements: asset, threat, vulnerability, and also impact. And focus on business impact, not just technical details. Use simple language. Do not complicate it. Okay. At last, we have some key takeaways. You can see these and go through these. I'll share these notes with the video. And thanks all. Bye-bye.